Yesterday I taught you here modal auxiliary verbs in English, correct? Now today we are going to make sentences with them, and then we are going to start a new modal auxiliary verb as well. Okay? Sure. Let us go ahead. So yesterday I started a new chapter over here. That's what modal auxiliary verbs in English. And if you have any questions regarding this as well, you can ask me. Okay, let's go. So I can write a letter. Can I write a letter? I can't write a letter. Yesterday I have started with a modal auxiliary verb in English, and that's what can. So when do we use can in English? Can you please tell me? What are the moods of can? And when do we use can? Ability, possibility, and permission. Correct. We have three moods of can, and those are what? Ability, possibility, and permission. Okay. We can use can for ability, possibility, and permission. Ability means what? Shakyata. Sorry, shamta. Okay. Shamta matlab yani kabiliyat. For example, I can speak English means what? I have the ability to speak English. Next, he can ride a bike means what? He has the ability to ride a bike as well. Next, possibility matlab yani shakyata, mumkaniyat. ऐसा हो सकता है. For example, it can rain today. Faizan can come tomorrow. So ऐसा हो सकता है कि वो आ सकता है. आज बारिश हो सकती है. So means what? Possibility is there. Next one, permission. We can use it can for permission as well. For example, can I have your WhatsApp number? Next one, can I come in? So can I come in? It is kind of permission. So we are using generally can for ability, possibility, and permission for three moods of English. Okay. So now, for example, we have seen here statement, question, and negative. Statement, question, and negative. Okay. I can write, can I write? I can't write. I want you people to go with the sentences one by one. कल मैंने आप लोगों को बहुत लंबा चौड़ा इसका explanation वगैरह दिया था full lecture के अंदर. Now I want you people to make sentences with them. Is that clear to all of you? Yes, sir. Getting it? Yeah. So one by one, we are going to go and we are going to make sentences with them. All right. Yes. Asma, ready? With I? Pardon? Yes, sir. Using I? Yeah, with I. Now you people are going to make sentences with I. I can I can't. I want you people to just make sentences with I can I can't. Okay. We're going to have only one round because it is really so easy. You people can practice at home and we can go speedy ahead. All right. I want you people to just make sentences only with one round. That's it, with I. Yes, Asma, can you please make Yes, sir. sentences with I? Yes, sir. I can buy, can I buy, I can't buy. Next, Jyoti. I can listen. Can I listen? I can't listen. Very good. Fida. I can read. Can I read? I can't read. Kausen. Namat, number 1. I can run, can I run? I can't run. 2. I can explain, can I explain? I can't explain. 3. I can jump. Can I jump? I can't jump. 4. 5. I can tackle the situation. Can I tackle the situation? I can't tackle the situation. 6. 7. 8. I can paint. Can I paint? I can't 9. paint. 10. I can ride. Can I ride? I can't ride. 11. 12. I can cook. Can I cook? I can't cook. 13. I can show, can I show? I can't show. 14. 15. I can swim, can I swim? I can't swim. 16. I can teach, can I teach? I can't teach. 17. 18. I can drive, can I drive? I can't drive. 19. 20. 21. I can speak, can I speak? I can't speak. 22. 23. I can arrange, can I arrange? I can't arrange. 24. I can hold my breath. Can I hold my breath? I can't hold my breath. 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 25. 26. I can learn English. Can I learn English? I can't learn English. 27. I can understand, can I understand? I can't understand. Now I want sentences with he can. Okay. Yes, Jyoti.
He can. He can read. Can he read? Can he read? He can't read. Asma. He can sleep. Can he sleep? He can't sleep. Fida. He can jump. Can he jump? He can't jump. Kosen. He can run. Can I run? Can he run? Can he run? He can't He- run. Next one. He can exercise. Can he exercise? He can't exercise. 2. He can admit. Can I admit? Can he admit? He can't admit. 3. He can add. Can he add? He can't add. 4. He can teach. Can he teach? He can't teach. 5. He can combat. Can he combat? He can't combat. 6. 7. 8. He can demand. Can he demand? He can't demand. 9. He can visit. Can he visit? He can't visit. 10. He can apologize. Can he apologize? He can't apologize. 11. He can't arrest. Can he arrest? He can't arrest. 12. 13. He can work. Can he work? He can't work. 14. 15. 16. He can agree. Can he agree? He can't agree. Agree. 17. 18. He can keep. Can he keep? He can't keep. 19. 20. 21. He can abuse. Can he abuse? He can't abuse. 22. 23. He can borrow. Can he borrow? He can't borrow. 24. He can assault. Can he assault? He can't assault. 25. I can help. Can I help? I can't help. रतालू he can के चल रहा है अपने साथ में sentence. 26. He can drive. Can he drive? He can't drive. 27. He can forget. Can he forget? He can't forget. Make sentences now with she can. She can. Asma. She can neglect. Can she neglect? She can't neglect. Jyoti. She can happy. Can she happy? No. She can't happy. Take a verb there. She can be happy. Can she be happy? She can't be happy. Next, Fida. She can laugh. Can she laugh? She can't laugh. Hossein. She can explain. Can she explain? She can't explain. 1. She can be angry. Can she be angry? She can't be angry. 2. She can refuse. Can she refuse? She can't refuse. 3. She can kick. Can she kick? She can't kick. 4. 5. 6. 7. 8. 9. She can consult. She consult. She can't consult. 10. She can broadcast. Can she broadcast? She He can't. can deserve. Can she deserve? Broadcast. She can't. Broadcast. Next, 11. 12. She can hesitate. Can she hesitate? She can't hesitate. 13. She can join. Can she join? She can't join. 14. 15. 16. 17. 18. She can play. Can she play? She can't play. 19. 20. He can jump. Can he jump? He can't jump.
He can't jump. 21. She can pass. Can she pass? She can't pass. 22. 23. She can disturb. Can she disturb? She can't disturb. 24. She can handle this issue. Can she handle this issue? She can't handle this issue. 25. She can mend. Can she mend? She can't mend. 26. Your voice is not there, Anha. 27. She can drive. Can she drive? She can't drive. Next, now I want you people to make sentences with it. It can. When do we use it? When do we use it? Animal. For animals, Animal, thing, Thing, places, baby. Correct. We can use it for animals, things, places, babies, and ideas. Okay. Good. Yes. Make sentences with it. Asma. It can be beautiful. Can it beautiful? It can't be. It can't beautiful. Be beautiful. It can be beautiful. Can it be beautiful? It can't be beautiful. When do we use be? For future tense. For future tense? Not exactly. Or When do we hona, use be? karna. I'm not asking the meaning. I'm asking when do we use be? Continuous purpose. No. When do we use be? When something is going on. Something suggestion. When something is suggestion. आप लोग को फ्यूचर टेंस के टाइम पर भी बताया था. When do we use be for nouns and adjectives? याद है? Yes. Nouns and adjectives के लिए हम लोग be यूज करते हैं. Let me share with you. मैंने उसका पूरा शायद मीनिंग भी लिखा रहेगा यहाँ पे. होना, रहना, बनना. ये देखो. कब का है ये? ये मैंने आपको पढ़ाया था. Yes, sir. 24 अगस्त को. अभी जस्ट एक 1.5-2 हफ्ता पहले पढ़ाया मैंने आप लोगों को ये. 24 अगस्त को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था. बी का मतलब होता है होना, रहना, बनना. एंड व्हेन डू वी यूज बी फॉर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स. याद आया कुछ? एक साथ में 2 वर्ब्स नहीं आते. उस टाइम पर बताया था मैंने आप लोगों को. सारा विल बी एंग्री. एंग्री एडजेक्टिव है. सारा विल बी अ टीचर. टीचर एक नाउन है. नाउन एंड एडजेक्टिव के लिए हम लोग यूज करते हैं बी. भूल गए आप लोग सब ये जब मैंने आपको जेरेंड वाला रूल पढ़ाया था एक. करेक्ट. मतलब यानी आप लोगों को लास्ट चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था वो यही पढ़ाया था. उसके बाद डायरेक्ट बाद में मैंने आप लोगों को कल का चैप्टर पढ़ाया है 6 सितंबर का. क्या बात है, आप लोग तो भूल ही गए. वेरी नाइस. सो व्हेन डू वी यूज बी फॉर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स वी यूज बी. बी का मतलब होता है होना, रहना, बनना. सो इट कैन बी ब्यूटीफुल. कैन इट बी ब्यूटीफुल? इट कैन बी ब्यूटीफुल. सो इट कैन बी ब्यूटीफुल. इट कैन बी ब्यूटीफुल. सो ब्यूटीफुल इज व्हाट? इट इज एन एडजेक्टिव. ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के लिए हम लोग यूज करते हैं बी. बी यूज किया वहां पर एडजेक्टिव के लिए जो क्या है ब्यूटीफुल. इट कैन बी ब्यूटीफुल. कैन इट बी ब्यूटीफुल? इट कैन बी ब्यूटीफुल. ऑलराइट. चलो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं आप लोग घर पर. नहीं करेंगे प्रैक्टिस, इंग्लिश नहीं आएगा. गारंटेड बोल रहा हूं मैं. चलो नेक्स्ट. मेक सेंटेंसेस नाउ. ज्योति. It can it walk. can it walk? It can walk. Can it walk? It can't walk. Next. Hussein. Fida. It can be happy. Can it be happy? It can't be happy. Number 1. It can run now. Can it run now? It can't run now. 2. It can be superior. Can it be superior? It can't be superior. 3. 4. जल्दी जल्दी एकदम रेडी रहना है आप लोगों ने. एकदम सोते मत पड़े रहो प्लीज. 5. It can be resolved. Can it be resolved? Can't be resolved. Resolved. 6.
7, 8, It can protect, it can't protect. 9, It 10, can cover. Can 9, it cover? It can't cover. 10, It can shake. Can it shake? It can. It can't shake. 11, 12, It can follow, can it follow? It can't follow. 13, It can wash. Can it wash? It can't wash. 15, It can review. Can I review it? I can can't it review? It can't review. It can't. Next, 16, 17, 18, It can run. Can it run? It can't run. 19, 20, It can grow. Can it grow? It can't grow. 21, It can cry. Can it cry? It can't cry. 22, 23, It can doubt. Can it doubt? It can't doubt. 24, It can be crucial. Can it be crucial? It can't be crucial. 25, 26. It can be nurtured. Can it be nurtured? It can't be nurtured. जल्दी बोलने का, सोते नहीं पड़े रहने का. 26, It can be written. Can it be written? It can't be written. return, PD. 27, It can be run. Can it be run? It can't be run. no. Can we say like this? It can be run. No, sir. No, sir. अभी मैंने बोला, Can अभी जैसे run. मैंने बोला आप लोगों को कि हम लोग एक साथ में 2 verbs यूज नहीं कर सकते. क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? I can go come to school, मैंने कल आपको बताया था. ये एक साथ में 2 verbs यूज नहीं कर सकते, जो कि गलत हो जाएगा. We can't say it can't be run. It can be run. We can say it can run. Can it run? It can't run. 2 verbs एक साथ में नहीं आएंगे. Next, I want you people to make sentences with you can. Okay, now sentences with you can. Asma, you can. You can forgive. Can you forgive? You can't forgive. Jyoti, You can teach. Can you teach? You you can't can't. teach. Fida, You can dance. Can you dance? You can't. Hossein, You can't enjoy. can. you enjoy? You can't enjoy. Good. Number 1, You can see. Can you see? You can't see. 2, You can be inferior. Can it be? Can you be inferior? You can't be inferior. inferior. 3, 4, You can be moved. Can you be moved? You can't be moved. no. Again, one verb should be there. You can move. Can you move? You can't move. बी नहीं लगाना है वहां पर. Move already verb है ना, तो वहां पर हम लोग बी नहीं लगाएंगे. We can say directly. Next, 5, You can cope. Can you cope? You can't cope. 6, 7, 8, You can pray. Can you pray? You can't pray. 9, You can communicate. Can you communicate? You can't communicate. 10, You can shine. Can you shine? You can't shine. 11, 12, You can publish. Can you publish? You can't publish. 13, You can lead. Can you lead? You can't lead. 14, 15, You can sing. Can you sing? You cannot sing. 16, You can 17, cook. Can you cook? You can't cook. 17, 18, You can get. Can you get? You can't get. 19, 20, You can break. Can you break? You can't break. 21, You can wait. Can you wait? You can't wait. 22, 23, You can defeat. Can you defeat? You can't defeat. 24, You can argue. Can you argue? You can't argue. 25, 26, You can join. Can you join? You can't join. 27, You can improve. Can you improve? You can't improve. you can't improve. So this is what you can. I want sentences with we can. We can. Okay, Asma, we can.
We can fight. Can we fight? We can't fight. Jyoti, We can speak. Can we speak? We can't speak. next. Kausen, We can collect. Can we collect? We can't collect. Fida, We can create. Can we create? We can't. number 1, we can. We can be a Scot. Can we be a Scot? We can't be a Scot. 2, We can admire. Can we admire? We can't admire. 3, 4, 5, We can rectify. Can we rectify? We can't rectify. 6, 7, 8, Can present. Can we present? We can't present. 9, We can borrow. Can we borrow? We can't borrow. 10, We can pick up. Can we pick up? We can't pick up. 11, 12, We can protect. Can we protect? We can't protect. 13, We can achieve. Can we achieve? We can't achieve. 14, 15, We can advise. Can we advise? We can't advise. advise, 16, Advise. We can be nice. Can we be nice? We can't be nice. 17, 18, We can accept. Can we accept? We can't accept. 19, 20, We can find. Can we find? We can't find. 21, We can support. Can we support? We can't support. 22, 23, We can serve. Can we serve? We can serve. 24, We can run away. Can we run away? We can't run away. 25, 26, We can struggle. Can we struggle? We can't struggle. 27, We can join. Can we join? We can't join. Saili jaldi bolne ka. Next one, they can. Okay, sentences with they can. Asma, they can They can separate. Can we separate? They can't separate. separate. Jyoti, They can plan. Can they plan? They can't plan. next. Fida, They can convert. Can they convert? They can't convert. Hossein, 1, They can support. Can they support? They can't support. 2, They can be modern. Can they be modern? They can't be modern. 3, 4, 5, 6, 7, 8, They can paint. Can they paint? They can't paint. 9, They can struggle. Can they struggle? They can't struggle. 10, They can visit. Can they visit? They can't visit. 11, 12, They can travel. Can they travel? They can't travel. 13, They can use. Can they use? They can't use. 14, 15, They can recognize. Can they recognize? They can't recognize. 16, They can help. Can they help? They can't be helped. they can't help not be. 17, 18, They can arrange. Can they arrange? They can't arrange. 19, 20, They can save tree. Can they save tree? They can't save tree. a tree or trees. A tree. 21, They can wait. Can they wait? They can't wait. 22, 23, They can realize. Can they realize? They can't realize. 24, They can separate. Can they separate? They can't separate. 25, 26, They can visit. Can they visit? They can't visit. 27, They can kill. Can they kill? They can't kill. okay. So this is what we can. For example, I can realize, we can rub, we can roll, he can reward, she can revenge, it can scribble, it can stumble, you can succeed, okay, etc. So we have seen here with can. Any doubts to anyone with can? Is your No, doubt sir. set? Can ke saath? No, sir.
So yesterday we have started with one model auxiliary verb, and that's what can in English. Okay. Now today we are going to see could. Now what's the difference between can and could? What do you mean by could? And when do we use it? What's the difference between can and could? Yes, can and could. Yes. What's the difference between can and could? सर वही है ना सर, जो कल बताया था सर आपने, जो रिस्पेक्ट. बैठ रहे हिंदी में नहीं बोलने का. So it is a respect. It can make a sentence respectful, sir. Very nice. So let's stop. Okay, what are the moods of could? Guys, what are the moods of could? Permission. If you see there, Permission. correct. Can and could both are the same. Same. Can and could both are the same. If you see there, can and could, there is no difference between them. Can and could both are the same. Can equals could, both are the same. दोनों भी same है. As you can see in Hindi, we have तू, उससे अच्छा होता है तुम, और सबसे अच्छा होता है आप. For example, तू, उससे अच्छा होता है तुम, और सबसे अच्छा होता है आप. वैसे इंग्लिश के अंदर है can, उसके बाद में आता है could. Getting it? So could is much more polite and much more better than can. Could से can से अच्छा है could. Is that clear? आप लोग अगर देखेंगे मेरे कॉन्वर्सेशन के अंदर, मैं मेरे पर्सनल बात कर रहा हूँ, मेरे कॉन्वर्सेशन के अंदर मैं can की जगह पे could यूज करता हूँ और will की जगह पर would यूज करता हूँ. Especially आप मुझे कभी भी मत देखना कि मैं जल्दी से can यूज नहीं करता हूँ, ना मैं will यूज करता हूँ जल्दी से. मैं जल्दी से यूज करता ही नहीं can और will. क्यों? क्योंकि थोड़े से नीच टाइप के, थोड़े तुच्छ टाइप के, लोकल टाइप के. ये कैन से बढ़िया क्या है, कैन से अच्छा क्या है, गुड है. वैसे ही क्या है, वुड इनसे सबका बाप है, सबसे टॉप लेवल पे यूज होता है वुड. सेम केस, कैन से अच्छा है गुड. कैन एंड गुड बोथ आर द सेम. वुड कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ. बट फॉर टुडे वी आर गोइंग टू सी हियर कैन एंड गुड. सो कैन उससे अच्छा है गुड, एंड कैन एंड गुड बोथ आर द सेम. एक्चुअली दोनों भी सेम है, पर गुड जो इधर थोड़ा सा उससे अच्छा है. Now, what are the moods of can? Ability, possibility, and permission. Same case. What are the moods of could? Could के moods कौन से हैं? Same. Ability, possibility. Ability, possibility, and permission. Could के भी correct. Could के भी तीनों क्या हैं? तीन moods से could के, वो है ability, possibility, and permission. जैसा can use कर सकते करते थे हम लोग, वैसे could भी use कर सकते हैं. For example, like this. I can speak English. हम लोग बोल सकते हैं I could speak English. Both are the same. Next, he can ride a bike or he could ride a bike. Both are same. Means what? Ability के लिए use कर सकते हैं हम लोग. For example, मतलब यानी ability का मतलब होता है क्षमता, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं काबिलियत. मैं ऐसा कर सकता हूँ, I can speak English, और मैं बोल सकता हूँ I could speak English. Next, he can ride a bike or he could ride a bike. Same case, we can use could for possibility. हम लोग could possibility के लिए भी यूज कर सकते हैं. For example, it can rain today or it could rain today. It can rain today or it could rain today. For example, Faizan can come tomorrow or Faizan could come tomorrow. दोनों भी correct है. So we can use their could, can, we can use their could for possibility as well. Same case. हमारे यहाँ पे यूज नहीं करते, वो लोग एड़े. To hell with them. Can I have your WhatsApp number? हम लोग यूज कर रहे हैं can permission के लिए. Same we can use there. Could permission के लिए हम लोग could भी यूज कर सकते हैं. Could I have your WhatsApp number? Or could I come in? हमारे यहाँ पे बोलते हैं may I come in? Could I come in भी बोल सकते हैं. See, model auxiliary का सबसे main मतलब क्या है हमारा? That it shows the moods of the sentence. वो sentence का mood बताता है. Second thing, English is a very easy language. अगर आप लोग को नहीं आ रही है English, वो आप लोगों का मसला है. क्यों? क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उसके लिए. आप लोग ने उसको दिल पे लेकर कितना प्रैक्टिस किया? कितने दिन आप लोग प्रेजेंट थे? मैंने बोला था एब्सेंट मत रहना. बहुत सारे लोग कल एब्सेंट थे. मैंने पूरा लेक्चर लेकर पूरा आप लोगों को एकदम डिटेल में बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है, पर आप लोग थे एब्सेंट. कुछ नहीं कर सकते उसके लिए. बाद में बोलते मुझे इंग्लिश नहीं आएगी. सॉरी टू से दिस. अब इंग्लिश के अंदर अगर मुझे जब अगर कोई घर में अगर घुसना है, कोई ऑफिस में जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा मैं? Could I come in? Can I come in? Correct?
अगर मुझे समझो ये याद नहीं रहा कैन आई कम इन बोलना, तो मैं उसकी जगह पे क्या बोल सकता हूँ? May I come in? Could I come in? Could I come in? और क्या बोल सकता हूँ मैं? May I come May in? I? May I come in? और क्या बोल सकता हूँ? Shall I? Shall I come in? So मतलब ये नहीं, बोलने का मकसद क्या था मेरा आप लोगों को कि इंग्लिश के अंदर एक सेंटेंस को बोलने के लिए कितने सारे अल्टरनेटिव्स है। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं? कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आऊं? शैल आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सो सबका मीनिंग एक ही है। इंग्लिश के अंदर कितने सारे अल्टरनेटिव्स है, एक सेंटेंस बनाने के लिए कितने सारे अल्टरनेटिव्स हमारे पास में। कैन आई कम इन, मे आई कम इन, शैल आई कम इन, एक सेंटेंस को बनाने के लिए कितने सारे अल्टरनेटिव्स हमारे पास में। इंग्लिश इज वेरी इजी। नहीं आ रहा है मतलब हमारा मसला हो रहा है कहीं तो भी। हमको नहीं आ रहा है मतलब हम लोगों ने पढ़ाई नहीं किया है। नहीं आ रहा है मतलब हम लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने कंप्लीट किया वो होमवर्क? पूरा कंप्लीट कितने लोगों ने किया ये वाला होमवर्क ग्रामर का? वोकैबुलरी का नहीं पूछ रहा हूँ, वोकैबुलरी तो छोड़ दो, वो तो किया ही नहीं रहेगा, वो तो मेरे को भी मालूम है। ग्रामर का कितने लोगों ने किया है? पूरा कंप्लीट किसने किया है? अस्मा, सुमैया, मुसैफ, बाकी लोग ने नहीं किया। सर पूरा नहीं किया, आधा बाकी हो लोग गया। मेरे पास में आ नहीं सकते हैं। मौलाना मैं आधा कबूल बोलूंगा, आधा कबूल तुम्हारे को बोलना पड़ेगा। देखो दोस्त मांगता ना वो अपने को, तो पूरा बोलना पड़ेगा फिर दोस्त। कबूल है, ओके। सो वैसे पूरा खाने का तो इंग्लिश पूरा आएगा दोस्त, वरना फिर इंग्लिश भी ऐसा इंस्टॉलमेंट में आने वाला है, फिर आधा आधा। गेटिंग इट? सो बोलने का हमारा मकसद क्या था आप लोगों को कि लिटरली हम लोगों ने होमवर्क नहीं किया। पूरा 9-10 दिन का छुट्टी मिला था आप लोगों को, आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। बाद में बोलेंगे कि आप लोग मेरे पास आकर मेरे को इंग्लिश नहीं आ रहा, बोल ही नहीं सकते। बोले तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा को? आसमा, आसमा, हाउ टू से मेरे से बुरा कोई नहीं होगा इन इंग्लिश? नो वन वुड बी वर्स देन मी। ट्रांसलेशन मारने का, ट्रांसलेशन नहीं मारने का इंग्लिश में। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको? नो वन विल बी वर्स देन मी। ट्रांसलेशन वाला है या गे सैली? ट्रांसलेशन नको गे सैली। सर कैन आई ट्राई? यस। आई एम इन टर्न। नो दोस्त, ये गूगल से मारे दोस्त अभी आपने? नहीं सर, फिर एक बार मेरे मैनेजर ने यूज किया था। अच्छा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं आई विल टेक द बिस्किट। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारा आसिम यूज कर रहा है उनकी नई नवेली दुल्हन के साथ में, शबाना प्लीज कुक बिरयानी टुडे अदरवाइज आई विल टेक द बिस्किट। आज बिरयानी बना के घेमड़ी दे तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो वो बोलेंगे जा बिस्किट ले रहा, बिस्किट का पूरा पैकेट ले, मेरे को नहीं उससे कुछ फर्क पड़ रहा। एक्चुअली बिस्किट का मतलब वहां पर क्या है? बुरा मानना। समझ में आ रहा है? आई विल टेक द बिस्किट मतलब है नहीं मैं आज अपना रूप काली माता का धारण कर डालूंगा और तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ऐसा मतलब है उसका। समझ में आया? सो आई विल टेक द बिस्किट। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे बनेगा ध्यान दो उसके ऊपर। इफ यू लाई सो आई विल टेक द बिस्किट्स। माँ बोलती है ना, अगर झुट्टे बाता करा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इफ यू लाई सो आई विल टेक द बिस्किट। अगर तूने झुट्टे बाता करा तो फिर मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। इफ यू लाई टू मी सो आई विल टेक द बिस्किट। इफ यू लाई सो आई विल टेक द बिस्किट। समझा? चलो नेक्स्ट वन। नाउ हमारा नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है आज का, वो है कुड। कैन हमारा कल हुआ था, कुड आज हम लोग देखेंगे। नाउ कैन एंड कुड बोथ आर द सेम। पॉइंट नंबर 1, कैन एंड कुड बोथ आर द सेम। वी आर यूजिंग कुड फॉर एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। हम लोग कुड भी 2-3 चीजों के लिए यूज करते हैं, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। गेटिंग इट? अब एबिलिटी मतलब है नहीं क्षमता, मतलब है नहीं काबिलियत। पॉसिबिलिटी शक्यता, मुमकानियत। परमिशन मतलब है नहीं परवानगी, मतलब इजाजत। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट अ लेटर, कैन आई राइट अ लेटर? आई कांट राइट अ लेटर। और हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं कुड के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आई कुड स्पीक क्वेश्चन। Could I speak? करेक्ट। कुड आई स्पीक? नेगेटिव I couldn't speak. करेक्ट। आई couldn't speak. I could speak. Could I speak? I couldn't speak. Next one, she could. She could arrange. Question,
Could she arrange? Correct. Could she arrange? She couldn't arrange. Negative. She couldn't arrange. Getting it? So she could arrange. Could she arrange? She couldn't arrange. She could manage. Could she manage? She couldn't manage. He could assign. Could he assign? He couldn't assign. I could deliver. Could I deliver? I couldn't deliver. He could believe. Could he believe? He couldn't believe. So we can use their could for ability, possibility, and permission. Any doubts to anyone? No, sir. No, Any sir. questions to anyone? So she could arrange. Could she arrange? She couldn't arrange. She could manage. Could she manage? She couldn't manage. I want you people to make sentences with could. समझ में आ रहा है? So जैसे हम लोग यूज करते थे अभी तक के can, उसकी जगह पे हम लोग could यूज कर सकते हैं. तो can and could में फर्क क्या है? Can is like 1 star, so could is like 5 star. 3 star. Okay. Can is like 1 star, so could is like 2 stars. Okay. ये स्टार क्यों है? सिर्फ हम लोगों को समझने के लिए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं इंग्लिश के अंदर. Okay. So I want you people to make sentences with could. I could I couldn't. I could I couldn't. He could he couldn't. She could she couldn't. अबे. Oh my gracious. Okay, please make sentences now. I could. Asma, I could. I could sleep. Could I sleep? I couldn't sleep. Jyoti. I could try. Could I try? I couldn't try. Fida. I could pick up. Could I pick up? I couldn't pick up. Kausen. I could wait. Could I wait? I couldn't wait. Next. Number 1. I could greet. Could I greet? I couldn't greet. 2. I could suffer. Could I suffer? I couldn't suffer. 3. 4. I could support. Could I support? I couldn't support. 5. I could transact. Could I transact? I couldn't transact. 6. 7. 8. Could explain. Could I explain? I couldn't explain. 9. I could succeed. Could I succeed? I couldn't succeed. 10. I could save. Could I save? I couldn't save. 11. 12. I could join. Could I join? I couldn't join. 13. I could play. Could I play? I couldn't play. 14. 15. I could recognize. Could I recognize? I couldn't recognize. 16. I could share. Could I share? I couldn't share. 17. 18. I could allow. Ready now. I couldn't allow. 19. 20. I could break. Could I break? I couldn't break. 21. I could travel. Could I travel? I couldn't travel. 22. 23. I could delay. Could I delay? I couldn't delay. 24. I could tolerate. Could I tolerate? I couldn't tolerate. 25. 26. I could travel. Could I travel? I couldn't travel. 27. I could prove. Could I prove? I couldn't prove. आगे सहेली जल्दी बोलने लगे. मुझे अभी तक कि किसी ने एक सवाल नहीं पूछा है. मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या. एक सवाल किसी ने अभी तक पूछा नहीं. कितने लोग ऐसे मानते हैं, कितने प्रतिशत लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कि मानते हैं कैन का पास्ट फॉर्म है कुड. Yes, sir. कॉलेज स्कूल्स में ही पढ़ाया गया था. जी मैम, मैं यही पूछ रहा हूँ कितने लोग ऐसे मानते हैं कि व्हाट डू यू थिंक, यस और नो, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, यस और नो. जल्दी जल्दी वोट करना है. जिसने वोट नहीं किया समझ जाओ वो गधा है. कौन है वो? गधा. और जिसने नहीं किया वो खुद ब खुद ही समझ जाएगा कि मैं गधा हूँ, क्योंकि मैंने करा नहीं ना. खुद ही समझ जाएगा वो. कैन का पास्ट फॉर्म है कुड. एक भी बंदा, मैंने सेंटेंस से स्टार्ट कर दिया पर किसी ने मुझे पूछा नहीं अभी बीच में घुस के कि सर है कि नहीं है. अभी भी कोई तो 2-3 लोग हैं जिन्होंने किए नहीं कुछ. खैर, एड़े लोगों के लिए अपन वेट नहीं करेंगे. आंसर आपके सामने है, ये देखो.
52% लोगों को लगता है, 52% people think that yes, could is the past form of can. Correct? सबसे बड़ा आंसर आप लोग को यहाँ पर आज एक चीज सीखने के लिए मिलेगा जो कि मैं आपको पहले से सिखाते आ रहा हूँ। अपने इंडिया में अपन वोटिंग गलत करते, गलत आदमी चुन के आता, फिर वो पूरे देश की पूरे सत्यानाश मारता, फिर बाद में अपन रोते बैठते। करेक्ट? अपने इधर में कॉर्पोरेटर गलत चुन के लेकर आते, फिर वो पूरे रास्ते के खराब करता, फिर बाद में अपन रोते, क्या बोलने का, रास्ते खराब है, ऐसा चोरा वैसा चोरा, तूने तो लेके आए थे चुन के उसको। सेम केस, गलत वोटिंग करते, गलत आंसर मिलता और गलत राह पे चलते, बाल भारती पढ़ते, बैल भारती बनते, आंसर गलत है। बिल्कुल सही, आप लोगों ने जो चूज किया ना, हाँ ऐसा हमारे को पढ़ाया गया है, आपके टीचर अड़े रहेंगे, सॉरी टू से दिस। क्यों मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ लिटरली, क्योंकि वो टीचर लोग आवाज उठाते ही नहीं है, वो टीचर लोग आवाज उठाते नहीं, खाली सैलरी लेते, घर पे बैठते। अरे एड़े लोग, जाके वहां पे बोलो ना, अरे गलत है ये, मैं तो खुला मुंह पर बोलता हूँ, फिर बाद में बोलते सर क्या कर सकते, अपन सिस्टम थोड़ी बदल सकते। अरे सिस्टम नहीं बदल सकते तो सिस्टम वालों को बोलो ना सही कि गलत पढ़ा रहे हैं आप लोग। कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, ऐसा हम लोगों को स्कूल में बोला गया है, जो कि सबसे बड़ा पागलपन है, ऐसा है ही नहीं। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, व्हेन डू वी यूज कैन, फॉर व्हाट टेंसेस डू वी यूज कैन, लिसन टू मी केयरफुली, फॉर व्हाट टेंसेस डू वी यूज कैन, कौन से टेंसेस के लिए हम लोग कैन यूज करते हैं? For all the tenses, sir. देखो ऐसा फेंकने का नहीं दोस्त। फॉर व्हाट टेंसेस डू वी यूज कैन? मेरे फेंको आसिम, we can use Present tense. can Simple for future tense. चुप बैठो, दूसरा दोस्त उनका फेंकू। अगर आप लोग देखेंगे हम लोग यूज करते हैं कैन प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। तो जान दो उसको, यहाँ पे ध्यान दो। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम लोग यूज करते हैं कैन। कुड कहाँ पे यूज करते हैं? Past सिर्फ tense. प्रेजेंट Past और and future. अब यहाँ पे ध्यान दो, कैन आप कहाँ भी यूज करते हैं? प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए कैन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेमो देता हूँ, एग्जाम्पल सुनो। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन राइट नाउ, ये प्रेजेंट टेंस है। आई कैन राइट नाउ, प्रेजेंट। आई कैन टीच नाउ, प्रेजेंट। आई कैन गो नाउ, प्रेजेंट। और फ्यूचर में आई कैन टीच यू टुमारो, प्रेजेंट, सॉरी फ्यूचर है। आई कैन गो देयर टुमारो, फ्यूचर है। नेक्स्ट, कुड कहाँ यूज करते हैं? वी यूज देयर कुड फॉर प्रेजेंट, Present. पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों में यूज होता है गुड। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा थोड़े बोल रहे थे हमारे टीचर नूरजा मिस ने, तो ऐसे बोले नहीं थे हमारे को। नूरजा मिस गए खड्डे में। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के लिए यूज होता है। ऐसा मैंने नहीं बोला, मैं अपने कमजोर कंधों पे लूंगा कि सारी जिम्मेदारी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा पागलपन करता नहीं। जवाब देना है। ऐसा, हाँ बिल्कुल, गचंडी है नहीं पर फिर भी गचंडी पकड़ सकते हैं अपनी कयामत के दिन। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर हम लोग यूज करते हैं कुड को। ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा बोला अंग्रेज लोगों ने। हाँ, मैंने वहां से उन लोगों की बोली हुई बात को मैंने कॉपी मारा और मेरी लिखी हुई किताब के अंदर मैंने इस बात का बखूबी जिक्र किया है। जिक्र अंजाम दिया जी, तालीम में बैठे थे हम लोग, तो वहां पे हमने इसका जिक्र किया, इसका हमारे यहाँ पे हमारे नहीं लिख डाले उसको। तो अल्लामा अंसारी इदरीसी फरमाते हैं कुड हम लोग यूज कर सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए। तो अल्लामा अंसारी इदरीसी फरमाते हैं यहाँ पर, यू कुड टेक हिम फॉर अ राइड, प्रेजेंट टेंस। यू कुड टेक हिम फॉर अ राइड नाउ। अब फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे अभी जैसे कि अभी हमारा छोटा पापा आसिम है, वो बोल रहा है मेरे को राइड मांगता है, मेरे को राइड मांगता है, तो अपन क्या बोलेंगे चाचा को? हाँ, यू कुड टेक हिम फॉर अ राइड। आप अभी इनको राइड के लिए लेकर जा सकते हैं, प्रेजेंट टेंस। शी कुड ड्राइव अ कार व्हेन शी वाज यंग। शी कुड ड्राइव अ कार व्हेन शी वाज यंग, पास्ट टेंस है ये। नेक्स्ट, वी कुड हेल्प देम इफ वी मीट देम। हम उनको हेल्प कर सकते हैं अगर हम उनको मिलते हैं तो, फ्यूचर टेंस। तो हम लोग कुड यूज करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर। समझा? 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 सर इन दैट केस सिंपल सी, यस, टेंसेस जो भी ड्राइव हो रहे हैं वो वर्ब्स के थ्रू ड्राइव हो रहे हैं, कुड से एग्जैक्टली। ओके। अब दूसरी बात अभी आपको समझाने के लिए एक और चीज है मेरे पास में, पपलू नंबर 2। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको जानना है कि प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है, कैसे जानेंगे? टाइम पीरियड लगा देने का उधर। फॉर एग्जांपल, आई कैन कम टुमारो, ये पास्ट का सेंटेंस है, करेक्ट? फ्यूचर सर। अच्छा, फ्यूचर का है, हाँ, जागे। आई कैन कम टुमारो फ्यूचर का टेंस है ये। फॉर एग्जांपल, आई कैन
right now. ये past का sentence है Present. बराबर? Present. Okay, present. आता अपने को आता. Next, she could read next week. Future. Future. He could amaze me now. Present. Present. Next, we could run fast in our childhood. Past tense. आता है यार आप लोग को तो समझ में आया? आपने सिखाया सर. समझ में आया इतना आप लोगों को? बाबा का हर लफ्ज सराखों पर. Oh my god, oh my god. So because of this time period, the meaning will be absolutely clear. ये childhood मतलब है नहीं, future में आता बराबर? Past में सर. Past में आता. So इससे समझ में आ रहा है past का ये, now का मतलब present, next week मतलब है नहीं, obviously future का tense है ये. So ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कब कहाँ पे use हो रहा है, कैसे use हो रहा है. Is that clear to all of you? Yes sir. So could जो है वो थोड़ा अच्छे लेवल का है. पहली बात तो could जो है it is much more polite than can. सेकेंड थिंग, कुड का एक दूसरा एडवांटेज क्या है कि कुड तीनों टेंस में यूज होता है. इसके लिए मैं सबसे ज्यादा कुड यूज करता हूँ. आप लोगों में से भी जितने भी अच्छे लोग हैं, सब लोगों के लिए, कमजोर दिमाग वाले लोगों के लिए ज्यादा दिमाग पे जोर देना नहीं. अपन रिस्क ले सकते हैं कि भाई दिमाग पे जोर देने का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. सो कमजोर दिमाग पे ज्यादा जोर देना नहीं, सीधा सिंपल कुड यूज करने का. हर टेंस में यूज होता है, कोई आपको पकड़ ही नहीं सकता है. ओके, सो कुड इज मच मोर बेटर देन कैन. एनी डाउट्स टू एनीवन? किसी ने पूछा नहीं, इसके लिए पूछते रहता हूँ. कुछ डाउट है कि पूछो. सो वी कैन यूज देयर कुड फॉर ऑल द थ्री टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. चलो, नाउ आई वांट सेंटेंसेस विद ही कुड. जल्दी जल्दी और भी जल्दी. Gone. Or off. Right, off, or on. हेलो. Yes sir, you are audible. Yes, sir. आप लोगों को आवाज आ रहा है मेरा? Are you able to listen to me? Yes sir, we are able to. Yes, sir. Yes, sir. Actually, there is a power failure at my side. So, जल्दी Your voice is lagging sir. Hello. 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 Sir, Sir. we could I hear don't you. know. Yes. आप लोग को आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. Yes, sir. Good, good, good. That's really good. चलो जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट
Okay. voice is lacking. Now I want you people to make sentence with he couldn't arrange. I want you people Your to voice is make lagging, sir. sentence with Sir, request you to please drop the message. hello. Yes, Sir, sir. you are Hello. audible. Yes, sir. Sir, I now we don't are know able what's to. happening with me right now. Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yeah. Yes. Please, all of you now make sentences with he could. Okay. Sentences with he could. I want all of you to make sentences with he could. One by one, without making mistakes. Make sentences with he could. Jaldi, jaldi, please. He could. Okay. Yes. So, Asma, ready? Yes, sir. Yeah. Please, all of you faster make sentences with he could. Okay. Asma, start, please. He could inject. Could he inject? He couldn't inject. Jyoti, Fida, He could believe. Could he believe? He couldn't believe. Hossein. One, He could imagine. Could he imagine? He couldn't imagine. two, He could confess. Could he confess? He couldn't confess. three, four, He could insult. Could he insult? He couldn't insult. five, six, seven, eight. I could explain. Could I explain? I couldn't explain. How सहेली ही चल रहा है अपना. Next 9, He could inform. Could he inform? He couldn't inform. 10, He could fly. Could he fly? He couldn't fly. 11, 12, He could join. Could he join? He couldn't join. 13, He could improve. Could he improve? He couldn't improve. 14, He could inform. He couldn't inform. Could he inform? It's troubling me a lot. Hello. Yes, sir. Yes, sir. It's troubling a lot, yeah. It's troubling a lot. Okay. So, 15,
He could inform. He couldn't inform. Could he inform? 16. He could hear, could he hear, he couldn't hear. 17. 18. He could follow, could he follow, he couldn't follow. 19. 20. He could manage, could he manage, he couldn't manage. 21. 22. 23. He could interrupt. Could he interrupt? He couldn't interrupt. 24. He could interfere. Could he interfere? He couldn't interfere. 25. 26. He could advise. Could he advise? He couldn't advise. Advise. 26. 7. He could guess, could he guess, he couldn't guess. Okay, once again. She could. Asma? She Yes, sir. She could introduce. Could she introduce? She couldn't introduce. She could. Jyoti, Fida, number 1. She could, she could invent, could she invent, she couldn't invent. Next, Kosen. She could increase. Could she increase? She couldn't increase. Next, number 1. She could invite, could she invite, she couldn't invite. 2. She could be optimist. Could she be optimist? She couldn't be optimist. 3. 4. She could interfere. Could she interfere? She couldn't interfere. 5. 6. 7. 8. She could revenge. Could she revenge? She couldn't revenge. 9. She could gain. Could she gain? She couldn't gain. 10. She could lie. Could she lie? She couldn't lie. 11. 12. She could astonish. Could she astonish? She couldn't astonish. 13. 14. 15. She could introduce. Could she introduce? She couldn't introduce. 16. She could be excited. Could she be excited? She couldn't be excited. 17. 18. She could approve, could she approve, she couldn't approve. 19. 20. She could be follow. Could she be follow? She couldn't follow. गलत सेंटेंस आना रे गलत होगा सेंटेंस आना दोस्त she could be follow नहीं बोल सकते अपन उसको she could follow could she follow she couldn't follow चिल्ला के बोलने का 21 22 23 She could inject. could she inject? She couldn't inject. 24 She could gamble. Could she gamble? She couldn't gamble. Sir, what is the meaning of gamble? gambling करना मतलब इन्हें जुआ खेलना. Okay. Bet. Betting करना. Thank you, sir. बेटिंग में थोड़ा अलग रहता है. गैम्बलिंग मतलब इन्हें जुआ खेलते ना. बेटिंग मतलब इन्हें शर्त लगाते हैं. गैम्बलिंग मतलब इन्हें पक्का जुआरी रहता है ना. वो की जिसको बोलते हैं वो पैटर्न का रहता है. Okay, sir. Thank you. 25 26 Could she help? She could help. She could help. She could. she could फेंको. Could she फेंको? She couldn't फेंको. She could help. Could she help? She couldn't help. Okay. Next, guys, just a minute, please. I'll have to drop it and we'll see you tomorrow once again. Okay. I'm so sorry for this one. Sorry. We'll see you tomorrow. I have an urgent call. We'll see you tomorrow. Bye-bye. Okay, sir. Cheerio. Cheerio.